टूरिस्ट सर्किट या टूर सर्किट, और टूर सर्किट कहें, ट्रैवल सर्किट कहें, कंसेप्ट वही है कि एक टूर टूर पैकेज में आप किस किस एरियाज को कवर करने वाले हैं एंड इन व्हाट प्रोग्रेशन, और उसी कॉन्टेक्स्ट में बातें होंगी मे बी इंटरनेशनल लेवल पर भी कि इंडिया को इंटरनेशनल वर्ल्ड से इंटीग्रेट करने के लिए what different packages we have developed. So let us proceed with the discussion that we started in the last class. जहाँ से हम लोगों ने लास्ट क्लास में जहाँ पर ख़त्म हुआ था कहानी. In fact, if you remember, what was the last thing that we discussed? मुझे लगता है we discussed about this Nilgiri circuit, and we also discussed about maybe this black water circuit. Yes, perhaps that was it. And let me showcase what exactly is meant by this black water circuit. And ये एक अलग डोमेन में ले जाने वाला कंसेप्ट है. यहाँ जो सर्किट है, here you find इसको कहते हैं बैक वाटर्स, और इसमें आपको मिलेगा द चेन ऑफ लगून्स, कैनल्स, लेक्स, जो कि अरेबियन सी के पैरेलल हैं. अरेबियन सी जो कनेक्ट करता है ना केरला एंड रेस्ट ऑफ द कोस्ट, तो वो प्रीडोमिनेंट हैं, गॉड्स अडोब केरला. तो केरला का जो साइड है उसको कनेक्ट करने वाले हैं. तो इस डोमेन में हालांकि बहुत लंबा हो सकता है ये सर्किट, और ये जो नेटवर्क है दैट में रेंज फ्रॉम 1500 kilometers, and it is out and out it is marked by a splendor. देखने में आपको एक अजीब एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज हियर द कनेक्टिविटी विद द नेचर इज वेरी प्रोमिनेंट. नहीं, नंबर ऑफ लेक्स, रिवर्स, इवन कैनल्स यहाँ आपको मिलने वाला है. एंड दिस इज एब्सोल्युटली सेरीन एंड पिक्चरस्क, जो एक बहुत ही शांत और लिविड पिक्चरस्क एकदम जो होता है ना, जो आपने कभी देखा होगा पिक्चर्स में, वो सामने दिखेगा आपको. एंड ऑब्वियसली टॉल पाइन्स एंड मैंग्रोव ट्रीज आर देयर. और सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ जो है कंसेप्ट ऑफ लग्जूरियस हाउस बोट. सो यू कैन रेफर टू, आपको कुछ विजन आपको देते चले कि so that you can identify which world are we talking of. So let us attend to this. आपको कुछ आइडिया मिले कि what exactly we are trying to showcase you. Just look at the pictures. You will have this idea of a backwater circuit. Show become like this is it. और इस बैक वाटर चेन में जिसको सर्किट का नाम दिया है, वहाँ जो प्रोमिनेंट सिटीज हैं where the different destination will be a part of, कोची, एलेपे and कुमारन. इनफैक्ट हम लोगों ने इसको क्लास में डिस्कस किया था when we refer to कोची, एलेपे and कुमारकॉम. अब देखिए जरा, जो सीरीन इन्वायरमेंट की बात हो रही थी, एक आउटलैंडिश या इस दुनिया से अलग है कुछ. गॉड्स अडोब कहते हैं इसको, क्योंकि गॉड का जो घर है वो कहते हैं इट इज केरला. और ये इसलिए बिकॉज नेचर से बहुत ही कनेक्ट होता है. ये पूरा जो सिनेरियो है यहाँ पर देख रहे हैं, लॉन्ग पाइन ट्रीज एंड मैनग्रोव्स एंड हाउस बोट्स, प्रीडोमिनेंट वंस. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के नाम पर नेचर को हार्नेस नहीं किया गया है. नेचर इज प्रीडोमिनेंटली इंटैक्ट. सो दैट वाज टिपिकल वन. द नेक्स्ट वाज जो कि बुद्धिस्ट
टूरिस्ट सर्किट। इनफैक्ट ये आएगा इंटरनेशनल सर्किट में भी। अब देखिएगा, इंटरनेशनल सर्किट की बातें हम लोग थोड़ी देर में करते हैं, विच विल बी द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द डिस्कशन। उसके बाद as far as my portion is considered, that will come to an end today. I will be concluding my discussions today, and obviously this is going to be the last class as far as I am concerned, and the rest of the जो बातें हैं वो डिपार्टमेंट में आपको इंटीमेट किया जाएगा। सो द बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट ये क्या है? ऑब्वियसली दिस रिलीजन को ही बनाया है थीम, और उसी से कनेक्ट किया हुआ है सारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। और यहाँ पर स्टार्टिंग विथ लुम्बिनी, हालांकि ये चले गए आप नेपाल में, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, टिपिकल स्पॉट्स सब है। एंड ऑब्वियसली टू टॉप इट ऑल, बोध गया। I believe most of you might have visited बोध गया, और शायद ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद अभी विजिट नहीं किया हो, लेकिन सुनर द बेटर। कभी मौका मिले तो जस्ट विजिट, एंड यू बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ टूरिज्म, एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। और वहाँ बहुत ही आप देखिएगा, बिकॉज ऑफ टूरिज्म किस तरह से डेवलपमेंट होता है। गया और बोध गया, you can feel the difference between the two cities. गया one of the ancient cities, और अभी देखिए बोध गया। कहते हैं ना, टूरिज्म से इकोनॉमिक ग्रोथ, वो पता चलेगा आपको बोध गया में। What difference tourism could do, आप देखिएगा। वर्ल्ड क्लास वहाँ पर होटल्स आपको मिलने वाले हैं, जो आपको शायद लगेगा कि ये सब बिहार में कैसे है। You perhaps may not have much of an idea. World class hotels where these tourists from all across the globe come and stay. जो बुद्धिस्ट हैं वो तो है ही, जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टूरिज्म भी आते हैं, they stay over there, and all sorts of comfort, all sorts of एक मिनट, that's right. हाँ नशर, हाँ अगर मैं, हाँ हाँ बोलो, हाँ करते हैं हम। हम करते हैं 12 बजे, हम 1 बजे होते हैं। हाँ हाँ हम, ओ अच्छा अच्छा, हम करते हैं ठीक है ना? हाँ हम करते हैं, हम कर लेंगे सर। अच्छा ठीक 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 ठीक, राइट। तो यहाँ पर जो है ना, पूरा बोध गया में यू विल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड बोध गया? यस, एनीबॉडी इन द क्लास? बोध गया जाने का कभी मौका मिला है? हैव यू विजिटेड? नो, यू कैन टॉक, यहाँ पर बात करना अलाउड है। भले क्लासरूम में आप बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यू कैन स्विच ऑन योर माइक्रोफोन्स एंड यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन शेयर एक्सपीरियंसेस। वी विल लव टू लिसन फ्रॉम यू। और वैसे भी ये जो क्लास है दैट इज कमिंग टू एन एंड। एक मिनट, ठीक है। सो एनीवेज, तो दैट इज इट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे किसी जगह का, सॉरी, टूरिज्म से कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इसका अंदाजा आपको चलेगा इफ यू हैपन टू विजिट बोध गया। मच ऑफ अ डिफरेंस। तो यहाँ पर जो फोकस करते हैं ना, वो है बस यही कि कैसे दिस सर्किट, और ये सर्किट में कौन कौन सा प्रोमिनेंट टाउन्स आपको मिलेगा। यू विल कम अक्रॉस लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। These are the prominent townships in this circuit.
और ये जो है बुद्धिस्ट ट्रैवल सर्किट, it is mainly in India, and particularly this tour is undertaken for the religious purpose, even for the sake of experience. Even if the tourist may not be Buddhist, still they prefer to visit. तो यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ही है. एंड हियर यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द बुद्धाज लाइफ, और द पीपल ट्री जो है वहाँ पर, दैट इज सीन टू बी बिलीव्ड, और कैसे उसको एज अ मॉन्यूमेंट प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और कैसे वो लोग देखिएगा कि इवन जो पीपल लीव्स होता है उसको कैसे एज ए मॉन्यूमेंट आपको वहाँ, इवन दे सेल इट, and something very exciting. So from Lumbini, where Buddha was born, to Bodh Gaya, where he attained Nirvana, Saranath, where Buddha preached. ये सब historic importance का place है, mind it. Saranath was the place where he first gave his public sermon. पहला बार पब्लिक को एड्रेस किया गया था, और वहाँ पर और he attained Nirvana at Bodh Gaya, you all know. So and Kushinagar जो है ना, there he attained salvation. So all important historic place that are connected to the life of Buddha उसी सर्किट में आपको मिलेंगे, Buddhist tourist circuit में, and it takes you through different phases of the lords of Buddha. More to monasteries and temples of Buddha. These places are important for Buddhist. How many of you perhaps are aware कि even Patna में there is a बुद्धिस्ट टेम्पल जो कि है राजेंद्र नगर में, और वहाँ देखिएगा इवन पीपल फ्रॉम भूटान कम, और वहाँ एक अच्छा का उन लोगों के ठहरने का जगह है वहाँ पर. दे कम एंड स्टे ओवर देयर. अंदर में होगा कोई टेम्पल भी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी टूरिस्ट बसेस आती हैं वहाँ पर, एंड men and women predominantly, children तो नहीं आते हैं, लेकिन men and women they alight from the bus and stay at that place. They stay there for some period, और बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स आपको मिलेंगे वहाँ पर. आपको आश्चर्य होगा कि ये इवन पटना में और राजेंद्र नगर में आपको ऐसा एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जहाँ की खासकर all sorts of even monks come, even people in their formal get-up, they also come and stay over there. So that is a very typical one. And इनके आने से of course आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अर्निंग का स्कोप है. लुम्बिनी में what are the typical sites? Like Maya Devi Temple, Lumbini monastic site, रॉयल थाई मोनेस्ट्रीज. थाईलैंड के बहुत लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे. दे कम एंड विजिट टू दिस मोनेस्ट्रीज. और यहाँ जो है ना, यहाँ है म्यांमार का, राजेंद्र नगर में. अब देखिए, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द म्यांमार गवर्नमेंट, एंड दे संग साख्या म्यांमार गोल्डन मोनेस्ट्री, दैट वाज आई वाज रेफरिंग टू. उसका एक ब्रांच आपको यहाँ भी है. एंड कुंदन स्तूपा, बोध गया में महाबोधि टेम्पल, द ग्रेट बुद्धा स्टैच्यू, मेटा बुद्धाराम टेम्पल, एंड रूट इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम कल्चर. सारनाथ में यू हैव गॉट धमकेश स्तूपा, नहीं, चौखंडी स्तूपा, तिबेटियन टेम्पल, सारनाथ टेम्पल, Japanese temple, and Wat Thai Sarnath temple. And you see, all these places are the hallmark of the religion. Kushinagar, Math War Shrine, Parinirvan Stupa, and Chinese temples.
and it takes a longer time perhaps. It will take perhaps 15 to 20 days to complete the circuit. लेकिन ये एक इंटरनेशनल टू ट्रैवल सर्किट है. People from across the world come over to visit this, जिसको एज अ थीम भी प्रेजेंट किया गया है. When the government, perhaps you might be aware, government has come up with स्वदेश दर्शन स्कीम, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे थीम बनाए हैं इंडिया को समझने के लिए, और जिसको कनेक्ट किया है टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट से लेकर. तो उसमें एक स्पॉट जो है ना वो ये है जो बुद्धिस्ट साइट है. ऑल द डिफरेंट बुद्धिस्ट साइट्स दैट वी हैव बीन रेफरिंग टू, राइट. सो टिपिकल वंस. और इसके बाद जो नेक्स्ट है टूरिस्ट सर्किट विच फाइंड स्पेशल मेंशन, दैट इज नन अदर देन चार धाम. एक तो आपको मिलेगा चार धाम, वो पूरे वो लार्जर स्पैन्स में है, लेकिन देयर इज अ छोटा चार धाम सर्किट, और जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री. तो गंगोत्री एंड यमुनोत्री, तो ये चार जो हैं, दीज आर द टिपिकल साइट्स. एंड ऑब्वियसली ये भी रिलीजन पर बेस्ड हैं. एंड जैसे वहाँ बुद्धिज्म पर था ना, यहाँ पर यू हैव गॉट these are important Hindu pilgrimage circuit, and it comprises of 4 most holy cities of Uttarakhand, and all these places have uh, their own individual history that makes them sacred. Whether you are religious or not, the mysticism and tranquility of each site will render you speechless. The journey through the treacherous yet scientific trail is sure to offer views that are incredible. This is one of the most popular tourist circuits of India. यानी all these sites na, this is an attempt to make you understand what India is and how diversified India is. आप देखिएगा एक सूफी सर्किट भी मिलेगा आपको. अगर रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको समझना, इंडिया को समझना है, you should prefer to visit different circuits relating to religion. Outstanding. यहाँ किसी खास को हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं. डिफरेंट शेड्स में इंडिया आपके सामने है. सो यू आर नॉट ओनली mesmerized by the scenic beauty. कितना सुंदर है, पिक्चरस्क है, कितना लुभावना, एकदम नेचर के करीब है कुछ सर्किट्स, और कुछ है एकदम वाइल्ड लाइफ के करीब है. कुछ है कि एकदम क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे था ना डेजर्ट सर्किट, या फिर रिलीजन, क्या सोच, क्या लाइफ स्टाइल. नहीं, बहुत कुछ हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है वो डिपेंड करता है आवर एफिलिएशन विद द रिलीजन एंड हाउ डिफरेंटली वी थिंक. इंडियन रिलीजन की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हियर वी टॉक इन टर्म्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. कितना अलग अलग सोचना, रिलीजन, प्रैक्टिसेस, कल्चर, बहुत कुछ, और सब कैसे एकदम इंटरवोवन है. टिपिकल इंडिया जैसा शायद ही कोई कंट्री होगा इन द वर्ल्ड. इफ यू थिंक, you will not come across many such country where who can boast of coming even closer to us. It is something not very easily possible. So these are the typical sites that we wanted to highlight. यहाँ पर एक सर्किट का कंसेप्ट है which will connect the prominent tourist spots, and they will refer about some of the preferred days, preferred time in the year to visit, कब visit करना चाहिए, and how much it would cost you, and obviously how much time it will take. So all the three
consideration will have to be kept in mind. And tourism is to be promoted. Now the government has taken very sincere steps in this regard. आप देखिएगा, when they talk of developing the different circuits, as many as 15, you may be surprised. अब क्या है ना कि there is a concerted effort that is being made. एक बहुत सोच समझकर पूरा पॉलिसीज को डेवलप किया जा रहा है, so that we can have an upper hand as to how to uh, uh, make the best use of the potential. अब बहुत एक कंसर्टेड एफर्ट लगाने की बात हो रही है. पीपल आर मेकिंग कंसर्टेड एफर्ट टू कैपिटलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, और उसको बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से लोग प्रोसीड कर रहे हैं, राइट. एंड देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल सर्किट्स हैव आल्सो कम अप. अभी तक तो था ना कि एक अरेंजमेंट आपने टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप किया है, उसी को हम लोग कवर करेंगे उसी हिसाब से, वेल एंड गुड. लेकिन कैन वी थिंक in a broader context? So that is the idea. How can we get the best possible advantage out of the tourist potential that we have got? And thank God that we have realized that we can harness the benefit to a large extent. और यहाँ पर लेट मी टेल यू कि इंटरनेशनल सर्किट में जहाँ की बातें करते हैं कि हाउ टू शोकेस इंडिया टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड, जहाँ की वो हमसे कनेक्ट हो सकें, हियर देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्वदेश दर्शन. स्वदेश दर्शन का जो कंसेप्ट है, जरा उसको जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट. और स्वदेश दर्शन पर वी आर कंसर्न कि ये सबसे पहले है क्या स्वदेश दर्शन. देखिए ये क्या है ना, इन द ईयर 2014 एंड 15, 2014-15 में द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, they launched this Swadesh Darshan. So it is a central sector scheme, number one, and it is launched by the Ministry of Tourism and Culture. So it is a government sponsored program. और सबसे बड़ी खासियत है इस प्रोग्राम की, यहाँ पर इंटरनेशनल सर्किट की बात हो रही है. माइंड इट, वी आर referring all this in context to international circuit. Lekin here we are very concerned about the fact that it is theme based tourist center circuits. ये जो पूरा सर्किट है ना वो थीम बेस्ड है. क्या मतलब? Here you will find that the tourist circuit will be demarcated. उसको अलग अलग करने की कोशिश की जाएगी on the basis of the different themes that will be the central idea, and as many as 15 thematic units have been considered. अगर थीम के बेसिस पर एनालाइज करते हैं, जिसको हम लोग शोकेस करेंगे टू द वर्ल्ड, कि पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड शुड कम एंड कनेक्ट टू दीज 15 सर्किट्स. तो यहाँ 15 सर्किट्स मिलेगा, 15, और जो यहाँ जो सर्किट्स हैं वो थीम पर बना हुआ है, अलग अलग थीम के लिए अलग अलग सर्किट बनाया हुआ है. और देखिएगा इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्वदेश दर्शन में इवन यू विल फाइंड सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स सो दैट दे शुड प्रमोट whatever circuits that lies under their domain. आप प्रमोट करें. आप समझ सकते हैं किस कंसर्न के साथ पूरे टूरिज्म को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है, राइट. इट इज अ मैटर ऑफ शोकेस. आप लोगों को अवेयर करवाएं, आप इनको इन्फ्लुएंस करें, सो दैट मोर एंड मोर फुटफॉल्स, मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट कमिंग इन. दैट इज इम्पोर्टेंट. केवल जाना, केवल आप
हाईलाइट करके नहीं हो सकता ना, आप उनको परसुएड करना होगा, उन्हें कन्विंस करना होगा व्हाट दे आर मिसिंग ऑल टुगेदर, द टूरिस्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो यहाँ पर ये सारा फंडिंग इसलिए भी हो रहा है कि देयर इज अ नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट. जो लोग आएंगे बाहर से, डेफिनेटली दे वुड प्रेफर द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उनको ध्यान में रखकर इन सारे मॉडल सर्किट्स को प्रमोट करने की पूरी कोशिश हो रही है. राइट. सो हाउ कैन वी convert the tourism sector as an major engine for job generation? Now that is one of the main important issues. How can we convert it? Because that is actually the reason. How can we go for the economic development of that particular these particular places? How tourism could be conceptualized to contribute to the GDP of the country? उस लेवल की बात करें. अब छोटी छोटी बातें नहीं. लेट अस गो फॉर अ कंसर्टेड एफर्ट, अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स टूरिज्म. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. और यहाँ पर ये जो 15 सर्किट की हम लोगों ने बातें करी, इसमें जरा देखिए क्या क्या सर्किट है. जस्ट अ क्विक रेफरेंस टू, क्योंकि बहुत सारा सर्किट ना ये जो इंडिजीनियस लेवल पे डिस्कस किया था अभी हम लोगों ने, उससे ओवरलैप करने वाला है. पार्ट ऑफ इट में भी, जैसे वन ऑफ द सर्किट दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड वाज बुद्धिस्ट सर्किट. ये जो बुद्धा सर्किट है, दैट इज जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड. ये जो बुद्धा, दिस इज वन ऑफ द सर्किट्स. एंड माइंड इट, वी आर डिस्कसिंग द थीम बेस्ड सर्किट्स which will be reflecting the international connectivity. इंडिया को समझने के लिए you may consider any of the 15 themes so that you understand and could consider these different circuits for the purpose of tourism. So they highlight, and the most important pilgrimage destination for the Buddhist tourists are included in this Buddha circuit, right? और यहाँ पर जो स्टेट हैं, ऑब्वियसली मे बी कुछ मध्य प्रदेश में भी हैं, बिहार में तो है ही, इवन उत्तर प्रदेश. सो एक लंबा चौड़ा सर्किट है ये, जहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं और जो कि बुद्धा के लाइफ से कनेक्टेड हैं, राइट फ्रॉम द बर्थ टू हिज निर्वाणा, वहाँ से पूरा ट्रैजेक्टरी वो बनाते हैं इस सर्किट में. एंड ऑब्वियसली tourists from all parts of the world will come wherever there is a predominant population of the Buddhists. And they definitely could make a hell of a difference. अगर इनको प्रमोट करें, we can harness the advantage in favor of the economic growth of the country. And not only that, we will also be able to generate a lot many of economic growth. उससे हमारे जीडीपी पर असर पड़ने वाला है. Right. Second circuit is the coastal circuit, जिसको अभी हम लोगों ने बैक वाटर्स का नाम दिया था. A coastal circuit जो है, that aims to strengthen India's position as a land of sun, sea and surf. कहते ना सन एंड सैंड, ये सन एंड सैंड वाला सेक्टर है, जहाँ सन भी है, सी भी है, सर्फ भी है. यू कैन सर्फ ऑन द वेव्स एंड एंजॉय. द टिपिकल वन, इट्स अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, जो कि अभी हम लोगों ने बोला अरेबियन सी से जो कनेक्ट है, वो वाला कोस्ट जो है. एंड दैट स्प्रेड्स अराउंड गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, जो भी कोस्टल से रीजन से कनेक्टेड है अरेबियन साइड से. एंड इवन वहाँ पर लोग अंडमान निकोबार को भी कनेक्ट कर लेते हैं. तो ये तो लार्जर प्लेन पे है ना. अभी हम लोगों ने कहा था वो दैट वाज ओनली रिलेटेड टू द अरेबियन सी, लेकिन उसको भी, उसके डोमेन को हम लोगों ने बढ़ा दिया. वी कंसिडर ऑल्सो तमिलनाडु, आंध्रा
मे बी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये कोस्टल रीजन को पूरा एक सर्किट बना दिया, राइट। और यहाँ इतना ही कि अगर इफ यू आर सो विलिंग, वी कैन ऑल्सो टेक यू टू अंडमान एंड निकोबार, एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग नर्चर्ड एज अ टूरिस्ट स्पॉट। वहाँ जो सीनिक ब्यूटी है, दैट इज अगेन वेरी प्रिस्टीन, उसको टच नहीं किया गया, एज इट इज है। अच्छा, वहाँ पर एक बात पता नहीं, यू माइट बी अवेयर, वहाँ जो ट्राइब्स हैं उसको भी लोग उसके उससे इंटरफेयर नहीं करते हैं। एक तो वहाँ वहाँ जोरावर है, वहाँ जो ट्राइब है उनका, उसका नाम है जोरावर्स। और वहाँ पर वो आपको बिल्कुल वो उससे आप डिस्कनेक्टेड होते हैं। वी डू नॉट ट्राई टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल। उनको हम लोग अपग्रेड करने की और मॉडर्नाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं, एज इट इज छोड़ा हुआ है। एंड दैट इज द ब्यूटी। सबको आप एक ही सांचे में ढालने की कोशिश मत करें, उनका अपना वे ऑफ लिविंग है, वही बहुत प्रिस्टीन है, वो लोग अनटच्ड हैं, इसीलिए बहुत ही लीस्ट अंडरस्टूड भी हैं। सो उनका तो अलग डोमेन है, उसके कोई उससे पूरा जो रेस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार है, दैट इज डिस्कनेक्टेड। मतलब इंटरफेरेंस के पार्ट के टर्म में द गवर्नमेंट डू नॉट ट्राई टू इंटरफियर, एंड दैट इज द ब्यूटी। यू कैन फिगर दिस आउट। थर्ड इज द डेजर्ट सर्किट, जिसके बारे में वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, लेकिन यहाँ पर डोमेन बहुत बढ़ जाएगा। देखो, when we refer to international circuits, obviously the area of coverage as far as, और जो length of the circuit जो है, that will increase by leaps and bounds, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। because when we refer to the desert circuit, the अच्छा, desert circuit ना, it's a niche, एक बहुत छोटा सा important segment है। और यहाँ पर टूरिस्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब is attracted, because it is not only endowed with the flowing rivers and vast forest, but also great deserts। यहाँ contrast मिलने वाला है आपको, vast forest भी है, flowing rivers है, and the great desert भी है यहाँ पे। So the sand dunes and exceedingly high temperature of the Thar desert, that was one. The arid land of Kutch and valleys of dry, cold Ladakh and Himachal attracts a lot of tourist attention. तो यहाँ बहुत contrast है. You can find a big difference as far as these different sites are concerned. Then there is an eco circuit, the fourth one, eco. और eco tourism circuit जो है, it aims at creating a positive interference between tourist and nature. टूरिज्म को नेचर से कनेक्ट करना, जो जिसकी हम लोगों ने अभी केरला में रेफर किया था, एंड फॉर द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट टू अप्रिशिएट द डाइवर्स इको टूरिज्म प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अब देखते हैं लोग मे बी प्रिस्टीन नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए दे विजिट द टूरिस्ट स्पॉट्स, एंड वन ऑफ सच टूरिस्ट स्पॉट हैपन टू बी इवन केरला, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, जहाँ की बहुत ज़्यादा नेचर से छेड़छाड़ नहीं हुआ है। नेचर इज वेरी मच इंटैक्ट। क्या होता था ना, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, नेचर यूज्ड टू फेस द फर्स्ट रैथ। सबसे पहला जो अटैक होता था ना, वो नेचर पर ही होता था। डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल डिग्रेडेशन, ये क्या बात हुई? नेचर को आप बर्बाद कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, तो ये कैसा डेवलपमेंट है? सस्टेनेबल नहीं है। Today we talk in terms of sustainable development, and that is very important. The fifth जो है, that is heritage culture. Heritage, what we have inherited. और यहाँ पर heritage circuit में you will come across that India is blessed with a rich and vibrant heritage, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स, सिविलाइजेशंस के लोगों का आना जाना रहा है। सो यहाँ पर जो हेरिटेज है एंड कल्चर है, दैट इज वेरी रिच।
And in fact, you will find that even UNESCO has considered as many as 36 sites as the World Heritage, right? एंड अबाउट 36 टेंटेटिव. तो बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है. आप समझिए कितना इम्पोर्टेंट यह सर्किट हो सकता है. एंड दिस सर्किट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन, sustenance, and better interpretive components, because it aims at meeting the needs of the global travelers. और यहाँ पर जो स्टेट्स हैं जो इस सर्किट में आते हैं, दैट इज राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पांडिचेरी, पंजाब, तेलंगाना ऑल्सो, राइट. अब नेक्स्ट कैटेगरी में हम लोग चलें, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट सर्किट. और नॉर्थ ईस्ट सर्किट है ना, देखिए डिफरेंट जोन में ही जा रहे हैं हम लोग. नॉर्थ सर्किट में ये टूरिस्ट सेंट्रिक डेवलपमेंट है यहाँ पर. इन दिस स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, यहाँ एक डिफरेंट कल्चर ही आपको मिलने वाला है. मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वो है ना 6 सिस्टर्स. तो टिपिकल ये सारा जो है उसी एरिया का डोमेन है. देन यू हैव गॉट हिमालय सर्किट. हिमालय सर्किट, यहाँ दे पे होमेज टू द हिमालयन रीजन ऑक्यूपाइंग द strategic position of the entire northern borders of the Himalaya. अब इस बॉर्डर में जो हिमालयन सर्किट है, you will find the states which are covered: Jammu and Kashmir, Himachal, Uttarakhand, and even to some extent the north east region. तो वो पूरा हिमालय का जो एरिया है उससे जो एडजेसेंट जो स्टेट्स हैं, they are a part of this Himalayan circuit. And then we refer to this Sufi circuit. Sufi circuit, again very important one, क्योंकि सर्किट में you will find, और ये सब सर्किट है ना जो रिलीजन और बिलीफ पर बेस्ड हैं, it is the way we celebrate. It is basically celebrating the age-old Sufi tradition of the country. It teaches you the path of unity in diversity, communal harmony, and developing their own unique music. Sufi music? Perhaps you might be aware of Sufi culture, where वो कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट ऑलमाइटी से, इन बिटवीन कोई नहीं, नो. तो इट गोज बियॉन्ड रिलीजन. रिलीजन से ऊपर उठते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी की बात होती है. आर्ट एंड कल्चर, सूफी ट्रेडिशन. तो देयर अनदर वे. सूफी एक अलग फिलॉसफी ही है जिसको समझना कि जो जानते हैं, दे परहैप्स मे अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट सूफी कल्चर. देन यू हैव गॉट कृष्णा सर्किट. और यहाँ पर टूरिज्म इन इंडिया हैज हिस्टोरिकल been associated with religion, or religion and spirituality have always been common motivators for travel, with many major tourist destinations have been developed. The development of Krishna cult or Krishna circuit is basically aimed at developing the places association with the legend of Lord Krishna. अच्छा, यहाँ पर टिपिकल वन, यहाँ पर जितने सारे लॉर्ड कृष्णा से कनेक्टेड साइट्स है उनका एक रेफरेंस है वो इस सर्किट में. और देन यू हैव गॉट इवन रामायण सर्किट. और यहाँ पर इट इज एम्ड एट डेवलपिंग प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ लॉर्ड रामा अक्रॉस द कंट्री. और मोस्ट ऑफ द सर्किट लाइज इन उत्तर प्रदेश as far as Ramayana circuit is considered. Then you have got rural circuit, another one, rural. Rural circuit में rural जो areas हैं, और अब सवाल है कि rural area क्यों कोई visit करेगा, but why at all they should. It is यहाँ पर concern है कि how to showcase the rural life.
नहीं, revitalizing the rural economy for giving both domestic and international tourists a glimpse of the true India. What is true India? कहते हैं ना, भारत की आत्मा जो है वो गाँव में बसती है। तो गाँव क्या क्या गाँव का कंसेप्ट क्या है? गाँव केवल में तो पॉवर्टी ही गाँव नहीं है। गाँव का जो वे ऑफ लिविंग है, दैट इज टू बी रिफ्लेक्टेड। वो कितना सिंपलिस्टिक है और कितना एनरिचिंग है, कितना कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी है, वो रिफ्लेक्ट करना होता है। इट इज नॉट कि वी आर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट टू शोकेस हाउ पुअर वी आर। नहीं, यहाँ भी जीने की एक शैली है। नहीं, खान पान या जो ड्रेस है, तो वहाँ पर हाईलाइट करते हैं। और यहाँ पर खासकर कुछ को जो गवर्नमेंट ने चुना है, दैट इज योर मालाबार जो है क्रूज टूरिज्म, एंड इवन बिहार गांधी सर्किट। तो वहाँ पर उसने सब सर्किट्स को बनाया है। इवन उसमें देखिएगा, इवन चंद्रहिया या तुर्कौलिया, अलग अलग ऐसा ऐसा स्पॉट्स बनाया हुआ है ना, वेयर पीपल कुड कम एंड वॉच आउट द रूरल लाइफ एंड कुड फिगर आउट कि कितना डिफरेंस है या कितना अलग हैं लोग, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सर्किट्स हैं। मे बी द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जहाँ की जो बर्थ प्लेस है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहाँ तो इंटर मिलेगा मस्ट। सारे के का एक जिस्ट मिलेगा आपको। एंड तीर्थंकर सर्किट, यहाँ जो पूरा जैन्स का श्राइन्स है उसका मिलेगा आपको। ऑल द डिफरेंट जैन श्राइन्स डॉट द लैंडस्केप। सो वाइल्ड लाइफ सर्किट, जिसके बारे में हम लोगों ने रेफर भी किया था, जहाँ की इकोलॉजिकल और नेचर सेंट्रिक या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे है ना एलिफेंट कॉरिडोर, तो नेचर को सस्टेन करते हुए डेवलपमेंट की बात करनी है और उसी को हाईलाइट करते हैं। वी हैव टू इंश्योर दैट द वाइल्ड लाइफ इज प्रिजर्व्ड, एंड देयर इज एन इनक्रेडिबल रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ। नहीं, इंडिया में जो रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ है दैट इज इमेंस, और उसे प्रिजर्व करना होगा। यू हैव टू इंश्योर दैट इट इज टेकन अ गुड केयर ऑफ, एंड इसी को शोकेस करना है। व्हाट range of wildlife are we bestowed with, और यहीं पर हाईलाइट करते हैं। एंड फाइनली वी हैव गॉट ट्राइबल सर्किट, जहाँ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लाइफ स्टाइल्स को फोकस करते हैं। और इस सर्किट में छत्तीसगढ़, नागालैंड, तेलंगाना आर बीइंग शोकेस्ड। यानी कहने का मतलब ये कि डिफरेंट सर्किट्स में भी हम लोग हाईलाइट करते हैं डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग को, राइट। यस राकेश, वांट टू से समथिंग? यू हैव रेज्ड योर हैंड। नो। So all these spots are going to make a difference. In fact, अगर आप देखिए the backwaters की जो हम लोग बात कर रहे थे, let's have some more uh, slides as far as the uh, portrayal of these sites are concerned. And कोच्चि, एलेपे एंड कुमारगांव जो हम लोगों ने बात की थी, इवन बैक वाटर्स की, जहाँ पर कहते हैं इट्स गॉड्स अडोबी, मतलब ईश्वर का घर है, दैट इज केरला। एंड वहाँ पर ये हाईलाइट करते हैं कि हाउ कितना प्रिस्टीन है, कितना प्रिजर्व्ड है यह कल्चर, और यहाँ का जो पिक्चरस ब्यूटी है, हाउ मच इज जस्ट हैव अ लुक एट इट, एंड आपको लगेगा कि यस, इट्स देयर इज अ बिग डिफरेंस।
अभी भी वही सी शोर्स और वही कल्चर, वही पाइन ट्रीज। तो आप नेचर से बहुत कनेक्ट होते हैं बहुत इजीली, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू हाईलाइट। अब साउथ इंडिया टेम्पल, साउथ इंडिया टेम्पल में देखिए, वहाँ का देखिए आर्किटेक्चर इज डिफरेंट। अच्छा, डोंट यू थिंक यहाँ पर जो अलग अलग साइट्स है उसमें कॉमन कॉमनैलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप इन सारे तीनों पिक्चर में अगर देखिए, डोंट यू थिंक दैट द आर्किटेक्चर इज समवट सेम, चाहे कोई भी मंदिर हो। टिपिकल एक आपको यूनिफॉर्मिटी मिलने वाली है, राइट। सो आप समझ सकते हैं इन कल्चर्स को, रिलीजन को, वे ऑफ लिविंग को, वाइल्ड लाइफ को, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, कल्चर को, बाय अ बेटर पोर्ट्रेयल, एंड सीइंग इज बिलीविंग। देखो क्या ना कि आपने मे बी यू हैव सीन द फोटोग्राफ्स, and you have maybe you are aware of the background, the history, everything, but unless you see and touch, you are not going to feel it. केवल पिक्चर में देखने से तो बात बनेगी नहीं। You will have a tentative idea. आपने many of you might have maybe seen कुतुब मीनार, लेकिन कुतुब मीनार या ताजमहल का अगर आपने फोटो देखा है और वाकई उस जगह आप गए हैं, अगर वही सीन, वही सिचुएशन, वही मॉन्यूमेंट को सामने देखते हैं, यू कैन टच, यू कैन फील, और अगर नज़र के सामने अगर हो थ्री डायमेंशन में, तो इट्स अ क्वाइट एन एक्सपीरियंस। होता है ना, लोग ऑ स्ट्रक हो जाते हैं, वो ना भौचक्के रह जाते हैं, टिपिकल वंस। तो वो जो फीलिंग है, वो जो एक्सपीरियंस है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी highlighted. That is how we are going to entice the travelers all across the world to visit this place. तो यहाँ पर हम लोग जो कंसर्न है, हाउ टू गिव एन इम्पेटस टू टूरिज्म, यू 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 कैन फिगर आउट कि ये जो टेम्पल, हाउ डिफरेंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टेम्पल्स आर, इट इज गोइंग टू मेक अ बिग ऑफ अ डिफरेंस। नहीं, मतलब कितना एडवांस रहा होगा। हम लोग ऑलवेज वी ऑलवेज जस्टिफाई कि अभी वी आर सो मॉडर्न, ठीक है, लेकिन आप जो ग्लोरियस पास्ट है उसको भी आप ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। वी हैव हैड अ ग्रेट पास्ट, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस सो प्राउड। तो दिस इज गोइंग टू बी, इवन यू हैव क्रिश्चियन सर्किट्स, और क्रिश्चियन सर्किट्स में we'll come across places like गोवा, केरला, तमिलनाडु, और यहाँ पर जो है चर्चेस डिपिक्टिंग द पोर्चुगीज आर्किटेक्चर, और कितना डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी है। गेटिंग इट, यू विल फाइंड द चर्चेज हैव गॉट, अच्छा, डू यू सी द डिफरेंस? ये जो पोर्ट्रेयल है चर्चेज का और यहाँ जो है टेम्पल्स का, आर्किटेक्चर वाइज कितना डिफरेंट है। एंड द डिफरेंस जो है, देयर लाइज द ब्यूटी। सबसे बड़ा जो ब्यूटी है वो डिफरेंसेस में ही है। और यहाँ देखिए चर्चेस, एंड यहाँ जो पोर्चुगल आर्किटेक्ट है, दैट इज प्रीडोमिनेंट, सो यू कैन मेक आउट। देन यू हैव गॉट ओडिशा, कोणार्क, पुरी, भुवनेश्वर, अगेन हियर यू हैव गॉट डिफरेंट अप्रोच। अब यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन, आप वहाँ से ना मॉन्यूमेंट से बहुत कुछ आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पता चल जाता है। नहीं, typical one, and a different sculpture altogether. And then you also have this Chennai, Kanchipuram, and Mahabalipuram.
तो ये तो मोर और लेस उसी टाइप का हो जाएगा जो कि बैक वाटर्स था, क्योंकि यहाँ भी बोट हाउस एंड द स्कल्पचर्स आर वेरी प्रिडोमिनेंट। और यहाँ पे अगेन द जो हैं मॉनेस्ट्रीज, वो भी आपको, अच्छा टेम्पल्स भी बहुत ही टिपिकल है। और वहाँ के स्कल्पचर से आप पता कर सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर might have been there. Nilgiri, Bangalore, Mysore, and these are the places. So, any one of you who have visited any of the sites, कभी ऐसा मौका मिला हो जहां आप इतने सारे अलग अलग स्पॉट्स में कहीं गए हो? Ever visited any of the sites? Because maybe not for the purpose of, or maybe why not, just to uh, spend your vacation over there, maybe with your friends or whatever, or maybe with your family members if you are gone. मथुरा, वृंदावन, आगरा। अब यही है कंसेप्ट सर्किट का। एक सर्किट में इन सारे को क्लब टुगेदर करेंगे एंड वी विल शोकेस कि उस पैकेज में कहाँ कहाँ वो आपको विजिट करने वाला है, और डिफरेंट सर्किट्स एंड दे विल वर्किंग आउट। तो ये तो खैर आप देखिएगा, इस तरह के पैकेज जो है वो टूर ऑपरेटर्स डेवलप कर लेता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो जो 15 पैकेज है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था अभी, वो 15 पैकेज हैं फॉर, वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड हैं एंड जो पीपल अक्रॉस द ग्लोब हैं दे आर बीइंग शोकेस्ड, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, अनदर वन। और यहाँ जो गोल्डन टेम्पल है, इट स्टिल इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेस टू विजिट। और यहाँ यू कैन मेक आउट कि अच्छा यहाँ पर आपको दिल्ली, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में देयर इज अ गार्बेज गार्डन। कोई गए हैं गार्बेज गार्डन? वहाँ टूटी फूटी चीज़ों से भी कुछ कुछ बना के स्ट्रक्चर, और मतलब कैसे अच्छा ये कुतुब मीनार भी है यहाँ पे। तो यू कैन मेक आउट कि कितने सारे डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट्स इज देयर इन इंडिया। छोटा चार धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। सो दैट वाज द लास्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड। लेकिन बस याद रहे, these are the some important places, and India, we can say, is so vibrant. We have got so much of yes, hold on. So we can conclude that when referring to the travel circuits, number of spots may come up in your mind, and all these spots are so important because it not only reflects ki what different interest area of yours is, whether you are uh, you have a bent of mind relating to religion or philosophy or spirituality or the nature, wildlife, maybe art and sculpture, religion. Number of themes could be conceptualized as far as the development of these circuits are concerned. So you may consider visiting to these different spots, or anybody across the world, because India still is considered to be a very mystical place to visit. पूरी दुनिया से एक अलग इमेज है इंडिया की। अभी भी कुछ लोग समझते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। On the other hand, they also consider that it is a man of rich literature. Maybe some of the reputed ones
the high achievers. And you see, today you find almost every progressive company has got a CEO who belongs from India. So क्या समझे इंडिया के बारे में? Don't you think it is such a complicated country to understand? एक जगह तो सारे जो गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और जहाँ चले जाइए, एप्पल और सब जगह आपको इंडियन सीईओ बन के बैठा हुआ है. एंड ऑल दीज मल्टीनेशनल कंपनीज हैव गॉट द इंडियंस on the driving seat. And Indian doctors are renowned the world over. Literature is also so rich. The pristine beauty, the nature, we are also blessed with uh, the natural beauty. And our culture has and ever will remain rich, because there is a convergence of so many different way of lives over India. यहाँ आप वाटर टैंक का 5 में नहीं रख सकते हैं. इतना ज़्यादा इंटरमिंगल्ड हैं, सब एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं. एंड दे ऑफर podium in which you find different people who are so different in so many respects are united with a common bond. And that makes India uh, a great country. A country जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. और इग्नोर करने की बात तो दूर है. You cannot feel shy of taking a notice of it. Now we are able to make our presence felt over the world map. ये पहले भी होता रहा है और अभी भी हो रहा है. And we have been able to consolidate our position. Now we are, sky is the limit for us, and we are soaring high and high. That is the concern. So with this, we come to an end of the discussion, and with this we uh, come to the end of my assigned portion. And I wish you all the very best, and make sure that you all excel in your own selected uh, profession, the way whatever we are going to venture out in the coming future. All the best. God bless you, and have a great day ahead. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.
Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Only very low attendance. So shall we start the class? Yes, ma'am. Okay. We have discussed all the 5 units in different classes. Okay. Today we will do a quick review and correlate the things. And in half an hour, I will summarize, and then there will be interactive session. You may be ready with your questions. The topic is tourism. Tourism and hospitality management. Hospitality is related to accommodation aspect. So tourism and hospitality management. First, we have defined the tourism, that it is a social, cultural, and economic phenomena. It entails the movement of people to places and countries outside their natural environment for personal or business professional purposes. So this, it means that a tourist will be moving out of its natural surrounding, and this is tourism is not just transportation or movement of people, but it has social, cultural, and economic aspects also. So tourism and hospitality is a service sector, and it is this sector is a key growth driver in economy. It accounts 2.5% of Indian GDP, and we have seen in unit 1, that is introductory. The main question will be on the importance of or significance of tourism, or the role played by tourism, mainly the economic importance. So what is the importance of tourism? Creates employment, direct and indirect, increases public's earning. When there is employment, there will be earning. It boosts government's income because tourists pay taxes. It increases infrastructure, rail, road, hotels, cruise, airports are developed to help tourism. Tourism encourages the foreign exchange earning of a country. A country gets more foreign exchange. Tourism is the largest export industry for a country. Tourism is an industry in itself, and it is the main source of earning foreign exchange. Tourism creates a cultural exchange between people of the same country or among foreign countries. Tourism enhances our knowledge. Our knowledge is enriched by tourism. When we move to places, we come to know about that places, and our knowledge enhances. When other tourists come to our place, we get to know about their place and their way of living, and our knowledge is enhanced. Tourism promotes national integration. National integration, it keeps the country's unity, because tourism promotes transportation, and with the transportation, the connectivity increases. It had some negative impacts. What are the negative impacts of tourism? Tourism means more transportation, means more pollution, more garbage production, overcrowding, congestion, crime, drug use, alcohol use, and the employment created by tourism is of seasonal nature. There are certain obstacles which create hurdle for tourism development in India. The first is bad road condition, poor sanitation facility. We are a very dirty nation. Poor law and order situation, many crimes, and our attitude towards tourists is not friendly. And lastly, government negligence. Government also neglects tourism sector. Tourism is not given the priority it needs.
That doesn't mean that no priority at all is given, but it requires more attention is needed towards tourism. The tourism attractions are of different type. Tourism attractions are called tourism opportunities. There are three elements of tourism. First is attraction. There are three elements in tourism. As per your syllabus, there are other elements also, but in your syllabus, three elements. First is attraction. Attraction is the tourism opportunity. The tourist place must have some attraction. Otherwise, no amount of transportation or hotel accommodation can encourage tourism. The place must have some attraction. What type of attraction? It may be heritage attraction. For example, Agra has Taj Mahal. For example, we have that Nalanda ruins, Nalanda Vishwavidyalaya ke खंडर है हमारे पास राजगीर में. There can be religious tourism, the way Kashi Varanasi has religious tourism, the way Bodh Gaya has religious tourism. Then natural tourism. Natural tourism is, for example, the Rajasthan has that desert safari. The Kerala has that backwaters tourism. Goa has sun and sand tourism. The hilly areas of Uttarakhand have different hill stations. Kashmir have different hill stations. They are known for their natural beauty, creating natural tourism. The medical tourism can be there. India is the origin of Ayurveda therapy, and it can attract that type of medical tourism. Now we have advanced hospitals which also attract tourism. The youth tourism is there. Youth tourism is maybe adventure tourism, for example, mountain trekking, or it can be academic excursions, like the place of academic institution, educational institution tour. Sports tournaments may be attraction. If a cricket match, international cricket match is organized, tourists visit that place. The agri-tourism can be there. Village and farms can be a place of attraction for urban people. For people from urban areas, villages and farms can be of attraction. Ecotourism, where wildlife is preserved, forest is preserved, or different animals are preserved, which the tourists come to see. The recent COVID has impacted adversely to tourism and hospitality industry. Rather, this is the area which has been worst affected by COVID, because this is a contact intensive sector, and it lost 100.8 million jobs due to COVID. This we have studied. This much we have studied in introductory unit. Then second unit was again a topic. Second unit was elements of tourism, which we have first introduced three elements: attraction, accessibility, and accommodation. We just discussed attraction. We have to discuss accessibility and accommodation. There are some tourism products. There are certain tourism products which are a combination of products and services. What are those? The tourism products are accommodation, hotels, transportation, bus, taxi, etc., restaurants, tourist information center, tour operators, tour guides, shopping centers, personal care centers like beauty parlors or spa, activities for recreation like boating, etc., emergency services like medical or police, tour escorts are there. So these are the tourism products, and these are the tourism products where the employment opportunities are. We can present ourselves as one or more of these tourism products. These tourism products, which we have just seen the list, are very different than other products.
What is the difference? That all those tourism products are of intangible nature. They are not physical products. They are intangible. And they are psychological in nature. The satisfaction received from those products are psychological in nature. Some tourists may like it, some may not like it. The same product may be liked or disliked as it is a psychological of nature. The tourism products are of highly perishable nature. Hotel booking, if you don't avail it on the same day, you will not get it next day or after a few days. The demand is of very seasonal in nature, very unstable. Very few tourists visit tourist places around the year. For example, nobody goes to a hill station during monsoon period. Nobody will visit the Thar desert during summer. So it is very seasonal in nature. There is a season for every tourist place. Supply is very constant. Even if demand increases in season, the supply cannot be increased. If the demand for hotel increases during good weather, supply cannot be increased. In case we buy or sell tourism product, there is no transfer of ownership. You get the services of a tour operator. You can't buy the tour operator. And there is no uniformity in these products. These products today they give one positive satisfaction, tomorrow they can give negative satisfaction. They are very risky. For example, the cricket match may be interesting in one day, and next day if home country is not playing well, it will become boring. If weather is good, the Goa beaches are full of tourists. If it becomes rainy, then nobody will visit that place. So this is not uniform and very risky, unlike physical product. Otherwise, suppose आप एक ड्रेस खरीदते हैं, एक जीन्स खरीदते हैं एक ब्रांड का, तो पता है कि हम इस ब्रांड का जीन खरीद रहे हैं, हमको यही मिलेगा. आप कोका कोला का कोल्ड ड्रिंक का कैन खरीदते हैं, बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, आपको पता है कि इसके अंदर वही बिस्किट होगा, वही बिस्किट आपको भी मिलेगा, वही बिस्किट आपके फ्रेंड को भी मिलेगा. अगर वही 2 बिस्किट के पैकेट आपने सेम ब्रांड के खरीदे, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, आपको पता है. कल आपने वो बिस्किट खाया था, आज फिर खरीदेंगे तो वही टेस्ट होगा उसका, आप जानते. लेकिन टूरिज्म प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है. वो उनका दे आर वेरी they don't have any uniformity that makes them very risky. And lastly, the tourism products are used in combination. They are of composite nature. They are not used in isolation. At a tourist place, if there is no proper transportation, good hotels will be of no use. If there is no transportation, no proper transportation, then good hotels nobody will come to visit that place, and having a good hotel will mean nothing. आप दुनिया का सबसे अच्छा होटल बना के बैठे रहेंगे, कमरे खाली रहेंगे, अगर वहां तक पहुंचने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, क्योंकि ये दोनों चीजें both will be used in combination. Similarly, if there is no accommodation, अगर वहां ठहरने के लिए होटल का अरेंजमेंट नहीं है, तो a good transportation will carry no tourist. कोई नहीं जाएगा अगर वहां ठहरने का अरेंजमेंट नहीं हो, because tourism means staying in that place at least for 24 hours. Now we will discuss the second element of tourism, that is hotel accommodation. Accommodation में आप लोगों को केवल hotel chain और hotel department पढ़ना है. Accommodation में we have to read only 2 things, that is hotel chains and hotel department. Hotel chain is a series or group of hotels at different locations but managed by the same group. Why we are focusing on hotel chains in tourism? Because in tourism, this is the type of hotel which is most related. A tourist is moving outside his known place of living. He is staying in a hotel. He doesn't know what type of services he will get in that hotel. And we have studied tourist circuit, that a tourist goes to visit a circuit. The tourists prefer a circuit. They want to see more than one place.
So at different places, they will be staying in different hotels. If there is a hotel chain which provide hotel in all the locations which they visit, suppose your Golden Triangle we visited yesterday, suppose the same a hotel chain has a hotel in Agra and it has a hotel in Delhi and it has a hotel in Jaipur, then the tourist will be more comfortable. He has stayed in Delhi in that hotel chain and he is satisfied. Now he is moving to Agra. He is confident that he will give the same type of service also there. He is not worried about the hotel now. So hotel chains are best suited for tourists because they are getting the similar services everywhere, and this makes them comfortable and secure. A hotel has different departments. Housekeeping department. So first, there is a front office department, which includes receptionist, and it interacts with the customer. There is a housekeeping department, which sees the cleanliness or maintenance of the hotel. Kitchen, where food is cooked. Food service, which includes waiter to serve the food to the guest. So these are the 4 departments of a hotel. We have discussed in accommodation. Accommodation is a tourist element and it is a tourism product. In accommodation, we have to discuss hotel chains and different departments of hotel only. Then there is, in second unit itself, there is one more tourism product, that is a tour guide. A tour guide is a person who leads the tourist to different locations of tourism and inform them about those locations in an interesting way. A tour escort is more or less the same person as a tour guide. Tour guide and tour escorts are the same person, but tour guides are licensed and tour escorts may or may not be licensed. There is another tourism marketing tool. Tourism products are products like any other product and they require marketing. प्रोडक्ट है तो उनको बेचने के तरीके भी सीखना होगा, लर्न करना होगा, डेवलप करना होगा. तो टूरिज्म प्रोडक्ट्स का जो लिस्ट हम लोगों ने देखा, इनको बेचने के लिए एक टूल है जिसको पब्लिक रिलेशन कहते हैं. पब्लिक रिलेशन प्रेजेंट्स different information about these tourism products in a very positive and desirable way about a tourist destination. Suppose Agra is a tourist destination, then the Uttar Pradesh Public Relation Department will present a very desirable and positive image about Agra, that it has Taj Mahal, that it has Buland Darwaja, there are good hotels. They will publish brochures and pamphlets and exhibit it on the trains or in newspapers or magazines about the nice experience one will have if it visits Agra. Similarly, there will be a public relation officer to inform about the special train Palace on Wheels. So this is public relation. Public relation is a tool of tourism marketing and it presents a desirable, a positive, a good picture of about a tourist location. In third unit, we have discussed tour operators. Tour operator is again a tour product. Tour operator is a tour product. He prepares a tour plan and sells it. He can sell it directly or he can sell it through a travel agent. A travel agent does the same work which the tour operator does. He sells a tour plan, but he has himself not prepared the tour plan. He is selling a tour plan prepared by tour operator. The tour operators have the total responsibility of the tour plan. In the case of any dislocation, they are responsible and they have an ATOL license, ATOL. A travel agent doesn't require a ATOL license. So travel agency and tour operator both do more or less the same work nowadays. The difference is that travel agents don't prepare the plan. They sell the plans prepared by the tour operator, whereas tour operator themselves prepare the plan.
There are some certain travel document, passport. Passport is an identity proof. It has all the informations about the tourist, and it is in a booklet form, contains several pages, and it is issued by the native government, by the home government. Visa is another travel document. Visa is issued by the foreign government whom you want to visit. Visa is not in the form of a booklet. It is in the form of a stamp. And this stamp is affixed on the passport. There is the rich and developed countries have several restrictions about visa. The tourists are supposed to fulfill certain conditions like having enough fund for their tour and stay. But there are countries who have very liberal visa rules, and those rich and developed nations of like UK or USA, they have strict rules. You have to apply for the visa much in advance. It takes a long process. There are countries in and around Asia which are very tourist friendly. These countries, the main activity is tourism, and to promote tourism, they provide on the spot visa. You just go to those countries and they will provide you a visa. For example, Thailand, you just go, and Malaysia, you just go Maldives. The tourist arrives there and he gets a visa. Normally, if there is nothing, he doesn't have a criminal background, they will immediately affix the stamp on his passport. So, and who is responsible to tell the tourist about passport and visa, about travel document? A travel agency. It is the work of the travel agency to inform the tourist about visa and passport. There are certain regulations for traveling. First is baggage regulation. Baggage regulation, the weight, it is basically it has a limitation of weight. जितना चाहे उतना वेट नहीं कैरी कर सकते. कितना वेट होगा, it depends upon which country you are going to and which airlines you are using. Then there are certain prohibited items which you can't take in on airlines, like explosives or drugs you can't carry. There is health regulations are also there. You need proper vaccination certificates. You have to carry health checkup and certificate or vaccination certificate. Vaccination against what disease? It depends upon which country you are going to. The different countries have different vaccination requirements. There are countries which are very tourist friendly and don't ask for any health regulation, any vaccination certificate. But in COVID days, every country needs a COVID vaccination certificate. What type of certificate? It again differs from country to country. And keep on changing from time to time. Travel agents are supposed to keep in proper information regarding those regulations and inform the tourists accordingly. There are currency regulation. A tourist cannot carry its home currency in a free way. There is a limitation. You need the currency of that. You need foreign currency of the currency of the country you wish to visit. There is also a limitation how much currency you can carry, and this limitation again depends which country you are going to. If you are traveling to a tourist friendly country, you don't need anything. Or if you are traveling to a friendly neighbor, like an Indian is going to Nepal, it doesn't require anything, no passport, no visa, no regulation. There is a custom duty. The tourist is carrying some baggage, some luggage with him. It is like importing or exporting of goods and services. So the custom will be imposed on that. How much will that custom be? We will for different. There are different rates. It will be informed, and the valuables are to be declared to the custom that is mandatory.
So we have discussed the transportation. In the unit 4, we have to discuss transportation. Transportation is a tour product and an element of tourism. In transportation, you have to discuss role of transportation, importance of transportation. It is the key position. Transportation is the key backbone of tourism, and it is the main important driver of socioeconomic growth. It saves tourist time. Without transportation, they cannot reach. It makes tourists comfortable, and it increases, enhances, supports tourism. With the development of transportation, tourism also increases. There is a direct and proportionate correlation between transportation and tourism development. Tourism is visiting far off places, and the fast means of transportation makes it possible. It makes it possible for a tourist to see many places. We have discussed a tourism circuit, and a tourist cannot visit the whole circuit without a fast means of transportation. A tour circuit includes many places, and a tourist cannot visit. Suppose some European has come to India and wants to visit Golden Circuit. It is not possible for him to visit the 3 states without a fast and convenient mode of transportation. So it's very the transportation is must. Sometimes a very attractive mode of transportation can become a tourist attraction. For example, Palace on Wheels is a special train. It is a mode of transportation, but it is so special that it itself is a tourist attraction, and many tourists visit India just to ride on this train. Transportation, there are different means of transportation in India. First is Indian Railway. Indian Railway is government owned. In government sector, we don't have private railways, and it operates within Indian territory. It is very important, and rail transport is the most preferred mode of transportation in India. It is the most preferred way of traveling for tourists. It enhances the national integrity. It has supported the national movement. It supports industrialization. It carries raw material, labors, machine. It helps in the marketing of finished product. It helps the development of agriculture. Farmers are able to to transport their product through. It helps in enhancing the ability of health and education. It carries people to schools or hospitals. For schools, colleges, universities, students go to far off place to study. Without transportation, that is not possible. We get medical facilities at far off places where the super specialty hospitalization, and it is not possible for us to reach to those places. We super specialty hospitals हैं. For example, दिल्ली में, पटना में एक पेशेंट अगर क्रिटिकली इल हो जाए तो फॉर सेम डे द वे वो पटना के हॉस्पिटल में जाता है, वो कुछ ही घंटों में दिल्ली के स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचकर ट्रीटमेंट हासिल कर सकता है. कैसे? एयर टैक्सी से. हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सीज वी हैव स्टडीड, इसमें एयर टैक्सी पढ़ा है. There are 2 special trains, Palace on Wheels and Royal Orient. Royal Orient train runs between Gujarat and Rajasthan, and Palace on Wheels run between Delhi, Agra and Jaipur. Royal Orient has been developed more or less on the style of Palace on Wheels. Palace on Wheels is decorated like different palaces of Rajasthan, and both the trains give a very royal like experience, and both of them are very expensive. The price is high. The airlines operated in India are Air India, Indigo, SpiceJet and Vistara. Air India was India's national carrier in public sector, but now Indian government has sold it to Tata Groups. This is in private sector now.
There are different types of taxis. For example, Ola and Uber, they are popular because they are safe. The drivers are registered. They have a GPS system showing the location. And this is considered safe in India, and they are affordable also. The air taxi is there, which is a small size commercial plane. It is very convenient, but in India, this is very expensive and used for medical purposes only, like air ambulance. There are Volvo coaches, which are long buses. They are very comfortable and good for long. Normally, road tour is not preferred for long journey. Train is preferred, rail is preferred for long journey. But the Volvo coaches or buses have the same facilities as the railway has. Therefore, they are also preferred for long routes. There are certain tourist circuits. A tourist circuit is something, a tourist circuit is a cluster of destination, a group of destination. It should have at least three major tourist destinations. Three major tourist destinations in three different cities or towns, and connected to each other, and not located not very far in the same locality. The Golden Triangle is the most popular. Delhi, Agra, and Rajasthan. Delhi, Agra, and Rajasthan make a triangle-like shape on Indian map. This includes Taj Mahal, Qutub Minar, Buland Darwaja, Red Fort, Hawa Mahal, Jantar Mantar, etc. This is Indian Railway provides a Shatabdi Express train to connect this Golden Triangle. The Golden Triangle includes religious places like Ajmer Sharif. This is most popular among foreign tourists or even domestic tourists, and the attraction is of heritage or historical in nature, and religions, of course. Buddhist circuit has religious importance and sometimes heritage also. We have mutt or structures of Buddha religion. It is the Buddhist circuit starts from Nepal. In India, it has Bodh Gaya in Bihar, where Buddha has got the enlightenment, and Kushinagar at Uttar Pradesh, where he gave his preachings and where he died. There is a Buddha circuit train named Mahaparinirvan Express. Vaishali and Rajgir in Bihar are other sites of Buddhist circuit. This Buddhist circuit is number one in the heritage list of UNESCO for India. There is the desert circuit. Desert circuit is in Rajasthan, in the state of Rajasthan, connecting Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner. Desert circle, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner in Rajasthan. In the desert, Thar desert, camel safari is very popular. The bumpy ride of camel attracts people. The Rajasthani people are very tourist friendly, and their art and culture is attractive, and they make it more attractive by their behavior. The backwater circuit is in Kerala, alongside Arabian Lake. It crosses different rivers, lakes, and lagoons. Three places: Kochi, Aleppi, and Kumarakom. There are luxurious houseboats through which people travel. There is Ayurvedic therapy centers, which includes medical attraction. The attraction here is natural or geographical. There is sun and sand circuit, which is actually sun, sand, and sea. It is at Goa, across the beaches of Goa. The tourists go there to get the sun, the bright sun, and just lie down on the sand and enjoy the sea. If the sun is very hot, they jump into the sea and swim. And when they are tired, they come back again and lie on sand and relax. So this is a natural or geographical attraction. So this much for your this paper. Any questions? Hello. Hello.
Yes, ma'am. Any question, Shipra? कुछ पूछना है? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, तो आप लोगों को जो जब एग्जामिनेशन हो, कब एग्जामिनेशन आपका ड्यू है? नहीं मालूम। No, ma'am. नहीं मालूम। जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो ऐसे टाइप होंगे, उसमें एग्जाम्पल देके इन योर ओन लैंग्वेज सूटेबल एग्जाम्पल देके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में बताइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन को जहां तक हो सके एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना। ओके, योर एक्वेंटेंस, आपको जो जानकारी है इन प्लेसेस के बारे में और टूरिज्म के बारे में वही आपसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वही पूछे जाएंगे जो आपको अभी जानकारी है। बहुत डाटा बेस्ड नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बट बेसिकली डिफरेंट इंडिया के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो किस स्टेट में हैं, क्या से रिलेटेड हैं, इतना तो हर किसी को मालूम होना ही चाहिए, जो विच एवरीबॉडी इज सपोज टू नो। whoever स्टेज इन इंडिया वो पूछा जाएगा आपसे। तो आप लोग पेशेंस से आप ये हैव ट्रस्ट कि यू विल बी टेस्टेड फॉर योर नॉलेज। You already know those things. You just have to concentrate and answer. Okay. What is the time right now? 43. No, any more questions? Hello. Then you tell me what is your subject? Shipra? Hello. Hello, Shipra. Yes, ma'am. What is your core subject? M.Com, ma'am. You are studying commerce, na? Yes, So ma'am. so in addition to your commerce papers you have studying tourism. This is for all students. Whenever you appear in some interview for some job, don't forget to mention that you have studied these papers also, your ability enhancing courses. They will add to your curriculum. Okay, that you have studied a full paper of 5 credits. It's something important. Though this paper is of qualifying in nature, still qualifying also means you have adequate knowledge about this paper and it will help you in building a career. So please try to see the whole thing from the point of view of self-employment or creating employment for others. You can, you never know when you will get an opportunity to use this knowledge. Try to understand it, that it is useful, and you will get some opportunity someday in life to use it for your career. It's not just for qualifying, it's not a burden which has been imposed to you. आप लोगों को जबरदस्ती आप लोग पर इम्पोज नहीं किया गया है, ये आपके कैरियर के एनहांसमेंट के लिए है, आपकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए है, that you are knowing it. You will read another ability enhancing courses also, and this one is commercial in nature and it will help you much. Now, who is Rohan Kumar? Rohan Kumar? Hello, Rohan Kumar. It is not there. Alka? Alka, can you hear me? Unmute your... Yes, ma'am. Alka, what is your Yes, core ma'am. subject? Commerce. Again, commerce, okay. And Sandhya Shri?
मैम साउंड नहीं आ रहा है। ओके नाउ क्या अब आ रहा है? यस मैम। आवाज आ रही है? हाँ यस मैम। आ रही है। Yes, ma'am. ओके मोनिका, हेलो मोनिका. मोनिका इज नॉट देयर. हु इज निवेद? Yes, ma'am. मोनिका इज देयर. मोनिका तुम्हारा कोर पेपर क्या है? Commerce. व्हाट इज दिस? इज दिस क्लास ओनली फॉर कॉमर्स पीपल? मैम ये स्पेशली एमकॉम वाले का ही है। ओके ये केवल एमकॉम वालों के लिए है. ओके ओके दैट्स I don't think it is supposed to be a common paper for others also. Maybe Yes, ma'am. others Common have paper not. है. This is a common paper for all the faculties who opt for it. I don't know how is it that it is only for commerce people. Okay, that's very good. If you all are from commerce background, then you must be in a position to better understand this, the importance of this. इसका ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ सकेंगे. तो this much information should be enough for you. So okay then, shall we close the class? If you don't want to discuss. Nivedita. Who is Nivedita? Nivedita, you are also from commerce? यस मैम। Okay. You are from second semester? यस मैम। Okay. Then in first semester you have studied AECC, that Swachh Bharat Abhiyan? यस मैम। पढ़ा है ना? उसके जिस तरह से क्वेश्चन पैटर्न था, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पैटर्न इसका भी होगा. ओके मैम। Okay. Core courses are all similar and non-core courses are all similar. मैम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे. मैम सेमेस्टर 1 में तो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आया था, बाकी टोटल और ऑब्जेक्टिव ही था. शॉर्ट क्वेश्चन नहीं थे? नो मैम. नो मैम, 30 ऑब्जेक्टिव एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन. और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? 30 question each 1 marks and 1 question for 20 marks. ओके 70 का था मैम. 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन एंड 50 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट. यस मैम. ओके तो अच्छा तो है ऑब्जेक्टिव, जिसलिए आपको एक जो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा उसको एटलीस्ट वो एक ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, उसको अच्छी तरह से लिखिए. और ऑब्जेक्टिव तो सब इजी थे. कैसे थे? फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस थे वो डिफिकल्ट थे ऑब्जेक्टिव? नो मैम. तो उसी तरह से इसको भी ट्रीट करेंगे सिमिलरली. द पैटर्न ऑफ द और स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑफ द सेम नेचर. जस्ट कीपिंग इन व्यू कि आपका कोर पेपर आप सबों का अलग अलग है कोर सब्जेक्ट, इसलिए इस बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होंगे, वो सब जनरल इन नेचर ही होंगे. ठीक है मैम सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन मैम इसमें डिफरेंट शॉर्ट आंसर. हाँ बोलो. एक बोलो. क्या शॉर्ट क्वेश्चन? मैम पिछले सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर का थोड़ा डिफरेंट है, इसमें शॉर्ट आंसर भी है और लॉन्ग भी है एंड ऑब्जेक्टिव भी है, तीनों है. अच्छा तो अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है? यस मैम. कितना मार्क्स बताइए फिर? शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का है. अच्छा 5 मार्क्स को कितने करने हैं? 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस और Okay. 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस. 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन. अच्छा और बाकी ऑब्जेक्टिव. दैट्स मीन्स इसका मतलब है ये मोर और लेस आपके कोर पेपर की तरह है ना? जैसे आपके बाकी कोर पेपर का भी ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते है ना. तो ये फिर ये 70 मार्क्स का है. ऐसा है कि अपने रेगुलेशन को विजिट कर लो. तुम्हारे वेबसाइट पे, पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे इसका रेगुलेशन होगा. और हेलो, आपके यहाँ आप
कॉमर्स में आपके 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को किसी को जानते हैं? मैम जैसा उसने कहा उससे थोड़ा डिफरेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव है। आप उनसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन मांग लीजिए ना, आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपके जो है सीनियर्स, मैम, हाँ तो उसका मैं उसी को उसमें, देख के बोल रही हूँ। उसी का बता रही है मैम वो। हाँ तो बताइए उसमें टोटल कितने मार्क्स का है? 10 ऑब्जेक्टिव है, 1 अच्छा, कैरिंग 1 मार्क्स, हाँ और हाँ टू है शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच, एंड हाँ, 1 लॉन्ग आंसर 20 मार्क्स। चलो लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पढ़ो तो बेटा, तेजी से पढ़ जाओ। Discuss the scope. डिस्कस 5 1 का आंसर, डिस्कस द स्कोप ऑफ टूरिज्म। लॉन्ग क्वेश्चन, Yes, ma'am. हाँ Describe the need of hotel industry in tourism development हाँ, वेरी गुड, हाँ and discuss the related documents. हम्म Industry of tourism development. हम्म The tourism circuit of Bihar. वन टूरिस्ट सर्किट, Discuss in detail some. सम, ओके। तो बुद्धिस्ट सर्किट तो है ही, और कल मैंने आप लोगों को बताया था, अच्छा यही क्वेश्चन थोड़ी आएगा, पर दिस आर जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, वेरी जनरल। और ऑब्जेक्टिव बता पढ़ो। Wait 1 minute, ma'am. हम्म, Objective. Tourism industry favor the growth of dash. Hotel industry, tourist guide, taxi bus service, all of these. अब बताओ इसमें क्या आंसर होगा, कॉमन सेंस से सोचो। All of these. ऑल ऑफ दिस, नेचुरली उसमें सभी इंटरलिंक्ड है। चलो सेकंड बोलो। Which of the following adversely affect tourism in the Himalayan region? Excess snowfall, landslides, sudden flood, all of these. अगेन Again, all of these. सो Growth वी of हैव tourism सीन, industry. चलो पढ़ती जाओ। Yes, ma'am. Growth of थर्ड, industry lead to dash. Increase in state income, increase in employment to local people, conversion of heritage site, and all of these. आंसर इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है, नेचुरली इट विल लीड टू ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, Which state of India has maximum number of heritage hotel? Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, and Karnataka. Rajasthan. नेचुरली हेरिटेज होटल्स Answer. राजस्थान में, देखो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है, क्योंकि राजस्थान वालों ने क्या किया है ना कि वहाँ बहुत सारे पैलेसेस थे, उन सारे पैलेसेस को होटल में कन्वर्ट कर दिया है, तो सबसे ज्यादा हेरिटेज होटल राजस्थान में ही है। चलो आगे बढ़ो। हेरिटेज, State of India. हाँ, विच स्टेट, Golconda. In which state of India Golconda Fort is located? Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, and Karnataka. बोलो मैम कहाँ है? तेलंगाना होगा। चलो आगे बढ़ो। ये हैदराबाद में है। हम्म Which city of India is known as Pink City? जयपुर। उदयपुर, लखनऊ, मुंबई। ठीक है, चलो हाँ, देखो जो बाकी जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो क्लियरली पता चल रहे हैं कि ये नहीं होगा, है। चलो आगे बढ़ो। Which of the following is not related to tourism hospitality? Transport facility, comfortable accommodation facility in hotels, e-visa, and airfare. विच इज, इसमें से क्या होगा आंसर बताओ। ई वीसा नेचुरली, क्योंकि इट इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी। चलो आगे बढ़ो। In which state of India Run of Kutch is located? रन ऑफ गुजरात। कच्छ, गुजरात। हाँ। Yes, ma'am. In which of the following state of India Konark Temple is located? Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Gujarat.
उड़ीसा। अब ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतना तो सबको मालूम है कि सन टेम्पल इंडिया में कहाँ है ना। तो अब ये, हाँ, और भी है ऑब्जेक्टिव? नो मैम, अब शॉर्ट आंसर है। हाँ बोलो, पढ़ जाओ, लाइन से पढ़ती जाओ उसको। हाँ, रीड आउट फास्ट। इम्पैक्ट ऑफ ऑन कल्चर, tourist guide, travel agency, Palace of Wales, and Buddhist circuit. Right short not any of two of the following. ये 5 hours में से 2 पे लिखना है। हो गया मैम। बस, तो ये सब बहुत ही जनरल टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट एक जो ऑब्जेक्टिव के बारे में देखने पे ये पता चल रहा है क्वेश्चन के ट्रेंड में कि मेन जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो आपको ऑल ओवर इंडिया के बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ताजमहल कहाँ है, सन टेम्पल कहाँ है, गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है। सो एक मेन प्लेसेस ऑफ गूगल सर्च करते हो ना सब? हेलो? यस मैम। हाँ, एक बार मेन प्लेसेस को, मेन प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट, मेन टूरिस्ट लोकेशंस इन इंडिया का जैसा सर्च करके वो कहाँ लोकेटेड है, किस स्टेट में, उसका एक लिस्ट देख लेना। मैक्सिमम 20 थिंग्स होंगे, 20 प्लेसेस होंगे। ये अदरवाइज भी हर किसी को जानना चाहिए, अवेयर सिटीजन शुड नो इट। ओके देन, ऑल द बेस्ट। आई थिंक दिस मच ऑफ प्रिपरेशन शुड बी इनफ फॉर यू टू डू गुड इन एग्जामिनेशन। पेशेंस से लॉन्ग आंसर्स को ऐसे टाइप, whatever you are knowing, use your language and your common sense and write with patience. You already know, तुम लोगों को इसमें से ज्यादातर चीजें पता है। तो चलो ठीक है, पैलेस ऑफ व्हील्स पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, उसके बारे में 4 इंफॉर्मेशन भी काफी है, 4 इंफॉर्मेशन भी काफी है उसके बारे में क्वालिफाई करने के लिए। तो और उतना, हाँ बोलो मैम, हॉस्पिटैलिटी को थोड़ा सा आप डील करेंगे प्लीज, वो समझ में नहीं आया। एक्चुअली टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक साथ ही है। टूरिज्म द कंपोजिट है उसको, हॉस्पिटैलिटी मींस होटल इंडस्ट्री, जो होटल एंड ऑल अदर थिंग्स आर हॉस्पिटैलिटी। जो टूरिज्म प्रोडक्ट में ट्रांसपोर्टेशन को छोड़कर बाकी सब हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी एक टूरिज्म प्रोडक्ट का लिस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। जस्ट एक सेकेंड, हम टूरिज्म प्रोडक्ट्स है, जैसे एकोमोडेशन होटल है, ये हॉस्पिटैलिटी है। रेस्टोरेंट इज हॉस्पिटैलिटी, टूर ऑपरेटर, टूर गाइड, शॉपिंग सेंटर, पर्सनल केयर सेंटर, एक्टिविटीज फॉर रिक्रिएशन, emergency services, medical, police, tour guides, escorts, these are all parts of hospitality. Hospitality is in Hindi like स्वागत सत्कार। मतलब एक बार वो वहां पहुंच गया, जब the services which he uses once he reaches to the location, when the tourist has arrived to the tourist location, after that whatever he gets in tourism, whatever he utilizes in tourism is in hospitality. और हॉस्पिटैलिटी के सिवा टूरिज्म में ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है, पब्लिसिटी भी है, पब्लिक रिलेशन इज बिफोर अराइविंग। सो hospitality means once you have arrived to the tourist location, then what you receive, that is hospitality. वहां पहुंचने के पहले जो कुछ रिसीव करते हैं वो हॉस्पिटैलिटी नहीं है। हॉस्पिटैलिटी है कि वहां पहुंचने के बाद क्या है। ठीक है, हॉस्पिटल वहां पर टूरिस्ट लोकेशन पे पहुंचने के बाद क्या है, वहां पर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, टूर गाइड हैं, ऑपरेटर्स हैं, पर्सनल केयर सेंटर्स हैं, एक्टिविटीज हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, वहां के का लोकल कल्चर है, लोकल पीपल का एटीट्यूड है, बट हाउ दे बिहेव टुवर्ड्स यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके Okay, students, then all the best for examination. Thank you so much, ma'am. Thank you मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.